मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. On the behalf of temple devotee, we would like His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj. एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलकर महाराज का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। No book. Bhagavatam. Where is it? Huh? Small character. Small character. Small character. Small character. Because I'm small. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Vallabha Giridhari. Gopijana Vallabha Giridhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Sri Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Sri Radha. Jaya Sitaram, Lakshman Hanuman, Sitaram, Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva.
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Guru Haribo, 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 Bol Haribo. Jayam Vishnupad Paramahamsa. Parivrajakacarya Astovatal Satat Systematic Divine Grace Iskcon Pandacharya. 𝒍𝒂𝒚𝒔 Abhacharana Bhakti Swami 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Astovatal Satat Systematic Divine Grace. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavendra Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadara Si Vasadi Si Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Samakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Si Vrindavan Mathura Dham Ki Jai. Si Mayapanavadvip Dham Ki Jai. Si Jagannathpuri Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Our glory to the sum devotees. Our glory to the sum devotees. Our glory to the sum devotees. Our glory is all glories to Sisi Gaura Angoranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasat Tato Jayo Mudirayit Nasta Paye Sabhadisu Nitya Uttam Siki. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 2, Text 3. Is that correct? Chapter 12. Oh. Okay. So you will do the translation now? It's okay. Ya Chatabandhu Bhuvita Shabdirudam Amvarurukshet Apiva Sapuge Sapanchavaso 𝒍𝒂𝒚𝒔 Prasadya Vaikuntam Avapatatpadam. Can someone try? What's the process here? Param? Huh? Oh. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Yaha sastabandhu bhuvita shadirubdam
Amvarurukshet apifa sapuge. Sapanchavaso yaraho 𝐉𝐻𝐈𝐍. Prasadya Vaikuntamava Tasya Prasadya Vaikuntam Avapatatpadam. Is it complete now? Okay. Yachastra bandhu bevitasya dirudam Amvar rurukshet apiva sapuge Sapanchavaso yaraho 𝐉𝐻𝐈𝐍. Prasada Vaikuntam Avapatapadam. Where you go? You go from parampara or from bottom up? I'm just joking. Do what you want. 𝑦𝒍𝒑बन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम् Matajis, anyone can try? More Matajis can try because I think about three men chanted. We want to balance it up. Yes. Two. What do you mean? Two more. Okay, thank you very much, Matajis. Oh, anyone else? Any other Mataji? Okay, carry on. Otherwise, we'll go on. So, word for word translation and purport by His Divine Grace, Iskcon Acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Yaha. Please responsibly repeat. Yaha, one who, Kshatrabandhu, the son of a Kshatriya, Bhuvi, on the earth, Tasya, of Dhruva, Adirudam, the exalted position, Anu,
Arurukshet cannot spare to attain. Api, even Vasapurge, after many years, Sat Panchavasaha, 5 or 6 years old. Yet, which 𝐂𝐻�ဣ𝐈𝐍, after a few days, Pasadya, after pleasing Vaikuntham, the Lord, Avapa, attained Tatpadam, his abode. Dhruva Maharaj attained an exalted position at the age of only 5 or 6 years, after undergoing austerity for 6 months. Alas, a great Kshatriya cannot achieve such position even after undergoing austerities for many, many years. Please responsibly repeat. Dhruva Maharaj attained an exalted position. Kindly, responsibly repeat. Dhruva Maharaj attained an exalted position. At the age of only 5 or 6 years. After undergoing austerity for 6 months. Alas, a great Kshatriya cannot achieve such position. Cannot achieve such a position. Even after undergoing austerities for many, many years. Yes. Should I read Maharaj translation and purport in Hindi? So that will come audience. Okay. हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को यहाँ पर बंधु कहा गया है, पूर्ण शिक्षा नहीं, क्योंकि वे 5 वर्ष के थे, वे वयस्क नहीं हो थे। किसी क्षत्रिय ब्राह्मण में उत्पन्न बालक तुरंत ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसे शिक्षा तथा शुद्धि प्रक्रिया अपनानी होती है। नारद मुनि को ध्रुव महाराज जैसे भक्त शिष्य पर गर्व था। उनके और भी अनेक शिष्य थे, किंतु वे ध्रुव महाराज से विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन काल में अपनी कठोर तपस्या से वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया, जिसे अभी तक सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राजर्षि ने प्राप्त नहीं किया था। यहाँ महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है। वे भी महान भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंग थी, यद्यपि उन्हें मृग का शरीर प्राप्त था, किंतु उन्हें अपना आत्मपद स्मरण रहा और सिद्धि के लिए उन्हें अगले जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए। ध्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई के वह एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा। उसे मात्र ध्रुव महाराज के समान ही गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। So I can read the purport too, for the purpose of. Are you recording this? Are you recording this? Yes. Okay, so I'll read the English. Purport. Dhruva Maharaj is described herein as Kshatriya Bandhu, which indicates that he was not fully trained as a Kshatriya because he was only 5 years old. He was not a mature Kshatriya. A Kshatriya or a Brahmana has to take training. A boy born in a family of a Brahman is not immediately a Brahmana.
he has to take up the training and the purificatory process. The great sage Narada Muni was very proud of having a devoted disciple like Dhruva Maharaj. He had many other disciples, but he was very pleased with Dhruva Maharaj because in one lifetime, by dint of his severe penances and austerities, he had achieved Vaikuntha, which was never achieved by any other king's son or Rajarishi throughout the whole universe. There is the instance of other kings, there is the instance of the great king Bharat, who was also a great devotee, but he attained Vaikuntha Loka in 3 lives. In the first life, although he executed austerities in the forest, he became a victim of too much affection for a small deer. And in his next life, he had to take birth as a deer. Although he had a deer's body, he remembered his spiritual position, but he still had to wait until the next life for perfection. In the next life, he took birth as Jadbharat. Of course, in that life, he was completely free from all material entanglement, and he attained perfection and was elevated to Vaikuntha Loka. The lesson from the life of Dhruva Maharaj is that if one likes, one can attain Vaikuntha Loka in one life, without waiting for many other lives. My Guru Maharaj, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, used to say that every one of his disciples could attain Vaikuntha Loka in this life without waiting for another life to execute devotional service. One simply has to become as serious and sincere as Dhruva Maharaj. Then it is quite possible to attain Vaikuntha Loka and go back home, back to Godhead in one life. Om Agyanatmirandasya Gnanjanam Salakaya Saksur Militam Yena Tismai Sri Gurave Namaha Sajetaya Manovista Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vedanti Swapadantikam Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gurudaya Puspavanto Chita Chantamonda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri 𝒍𝒂𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒑 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Bhistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Swanyamvadi Pasatyadi Satarine Panchakalpatari Dyacha Kripasanandhya Evacha Patitanam Pavanandhyo Vaishnavyo Namo Namo. So welcome everyone to this morning Srimad Bhagavatam taking place right here in Iskcon, Faridabad. मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ यहाँ फरीदाबाद में भागवतम कक्षा देते हुए. This is not a weekend. ये सप्ताह का अंत नहीं है, ये सप्ताह. And everyone is busy in the Delhi metropolis and Delhi surroundings. Everyone is busy. So यहाँ पे हर कोई व्यस्त है अभी. But you find a time to come and participate in the class. So it means you love Krishna. You love hearing Krishna Katha. You love discussions about Krishna. It means you are a great devotee. तो इतना बिजी अपने व्यस्त शेड्यूल में से आप लोग समय निकाल के आए हैं भागवतम कथा श्रवण करने के लिए. इसका मतलब आप अच्छे भक्त हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं और आप सब लोग मतलब बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए आप कृष्ण के लिए समय निकाल के आए हैं. The taste for hearing the Bhagavatam has to be there. Otherwise, you can use this time to do some other things. तो भागवतम आपका इससे प्रमाणित होता है कि आपको भागवतम कथा सुनने में रुचि है, वरना इस समय को आप कहीं और भी लगा सकते थे इस समय. So thank you very much for coming to participate in this Bhagavatam class. Maharaj, as part of Vaishnava culture, I want to like a small introduction for the audience. Huh? Small introduction for the pleasure of audience. You don't know me. Please, Maharaj. Okay. Where will you get that? What is it? No, in this long introduction is just हरे कृष्णा. तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज हैं. हिज होलीनेस भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज की
तो महाराज के बारे में जैसे महाराज ने बताया है कि लोग जानते हैं, बट फिर भी एज अ पार्ट ऑफ गौड़ीय वैष्णव कल्चर हम लोग महाराज का थोड़ा गुणगान इंट्रोडक्शन में एक गुरु के मैनेजमेंट एंड डिसीजन साइंसेज फ्रॉम वर्ल्डन यूनिवर्सिटी मिनेपोलिस USA, और बहुत बड़े स्कॉलर हैं महाराज, जो कि लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज उसके मतलब वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं इसमें। और उन्होंने 35 से ज़्यादा पब्लिकेशंस यानी कि रिसर्च पत्र, शोध प्रमाण शोध पत्र को दिया है अलग अलग जगह पे। उसका विषय है कि गौड़ीय वैष्णव को कैसे, गौड़ीय वैष्णव शिक्षाओं को हम कैसे मैनेजमेंट में, प्रबंधन में जोड़ सकते हैं। और उनका अभी पब्लिकेशन आया है जो कि अवार्ड विनिंग पब्लिकेशन है, वो है सोनिक थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। सो महाराज बहुत इज वेरी स्कॉलर फॉर दिस, and Maharaj is a dear disciple of His Holiness Bhakti Tirth Swami Maharaj, and we are all fortunate to hear from His Holiness Bhakti Vasudeva Maharaj. Hare Krishna. And I took science initiation from His Holiness 𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 Swami Maharaj. Okay. So let's get back to business. All this is now they're taking our time. Anyway, I'm just joking. All right, so in the Prabhupada emphasized so much about lessons to learn from Dhruva's case. तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए ध्रुव महाराज से के जीवन से। That if one becomes serious in devotional service, sadhana bhakti, in service to the devotees, in service to Guru and Krishna, in this very lifetime, you can go back home, back to God. तो अगर हम अपनी साधना भक्ति में, अपने भक्तों की सेवा में, गुरु की सेवा में, कृष्ण की सेवा में निष्ठावान बनते हैं, तो हम लोग इसी जन्म में जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। In fact, Lord Krishna mentions in the Bhagavatam Purana, in his discussion with Arjuna, that service to his devotee is more important, more valuable to him than service directly to him, Lord Krishna. तो पद्म पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भक्तों की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से। So that even goes beyond the very idea of what we have in the Mangalacharna, that yes, prasada, Bhagavad prasada, yes, prasada, Nangatikutopi, by pleasing the spiritual master, you praise Krishna. Krishna says that if you just serve the devotees of the Lord, that service is more valuable than, service to me. तो ये एक विचार और ऊंचा ले जाता है हमको, जैसे मंगल आरती में हम कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि गुरु की प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता होती है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे को प्रसन्न करने से अच्छा है कि भक्तों को प्रसन्न करो, तो भक्तों को प्रसन्न करोगे तो मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। So this is a shortcut to attaining Krishna. ये एक तरह से शॉर्टकट है, ये कुंजी है कृष्ण को प्राप्त करने की। If we are driving on the road, we try to use, different routes, but the best driver wants to take the shortest route to get to his destination, shortcut. तो जो हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो हमको सबसे छोटा रास्ता चाहिए होता है, तो अच्छा ड्राइवर वही है जो सबसे छोटे रास्ते में सबसे जल्दी पहुंच जाता है। Who amongst you likes to ride a bicycle from here to Vrindavan? तो कौन है जो आप लोग जाते हैं यहाँ से वृंदावन गाड़ी में? Or walk from here to Vrindavan instead of going by a car? तो पैदल, by foot? Instead of going by a car, who prefers to go by walking? तो गाड़ी में जाने की अपेक्षा कौन पसंद करेगा यहाँ से वृंदावन पैदल जाना चाहिए? So to save time, we go by car to Vrindavan. तो हम समय बचाने के लिए गाड़ी से, वाहन से अपनी यात्रा करते हैं। Not only saving time, to save bodily injury and bodily degeneration, we take automobile to Vrindavan. तो ना ही सिर्फ समय बचाने के लिए, शारीरिक कोई चोट लग जाए, कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम गाड़ी की सहायता लेते हैं, वाहन की सहायता। So when we know the secret of success in Krishna consciousness,
we have to implement that strategy in our devotional development. भक्ति मार्ग में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, रहस्य को जानते हैं, भक्ति की सफलता के रहस्य को, तो इस चीज़ को हमें, इस योजना को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने जीवन में नियुक्त करना पड़ेगा. So following what Krishna's strategy is that service to his devotee will expedite the process of attaining him. तो ये हमारी योजना क्या है कि भक्तों की सेवा करना, उससे जो भक्ति की विधि है वो शीघ्र. He didn't say, the pujari, the person who is worship me on the altar every day, he is my best devotee. तो कोई कह सकता है कि जो व्यक्ति पुजारी जो दिन भर विग्रहों की सेवा कर रहा है वो सबसे ऊंचा भक्त है. Oh, the best book distributor, he is my best devotee. तो जो सबसे ज्यादा पुस्तकों का वितरण कर रहा है वो सबसे अच्छा डिवोटी है. Oh, the sannyasi or the guru is my best devotee. तो ये जो सन्यासी हैं, जो गुरु हैं, ये सबसे अच्छा भक्त है मेरे लिए. He gave a very simple approach, very simple and energy effective. In other words, you don't waste too much, there's no too much of strenuous endeavor in this process. It's simply to serve the devotees of the Lord, and Krishna is superlatively pleased. तो ये इसमें बिना किसी शक्ति का अपव्यय किए के, बिना किसी रोकथाम के अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं तो कृष्ण बहुत शीघ्रता से हमसे प्रसन्न हो जाते हैं. So if you do this, if you adopt this, this is not my strategy, it's Krishna's strategy. That's what he said in the Padma Purana. This is the strategy that he proffered to Arjuna. ये कोई मेरा व्यक्तिगत कोई योजना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कृष्ण की योजना है जो उन्होंने पद्म पुराण में अर्जुन को बताई थी. So we may not go into the forest to perform severe penances and austerities like Dhruva Maharaj. We may not have to. It's not recommended in Kali Yuga for us to go to the forest to perform severe penances and austerities like Dhruva Maharaj. तो इस कलयुग में हमें आवश्यकता नहीं है कि ध्रुव महाराज की तरह जाके जंगल में हम कठोर तपस्या करें. But there is something we can learn from Dhruva Maharaj. His fixated determination. तो हम ध्रुव महाराज से लेकिन हम एक चीज सीख सकते हैं, जो उनकी दृढ़ता है उसको हम सीख सकते हैं. See, remember the background of Dhruva Maharaj's case is that he was abused by his stepmother. तो अगर हम ध्रुव महाराज की पृष्ठभूमि में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो ध्रुव महाराज को एक तरह से प्रताड़ित किया था उनकी सौतेली माता ने. He was sitting in his father's lap, and the stepmother, the beloved queen of his father, Uttanapada, stepmother says, "Hey, you're not supposed to be there. Get down." तो ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे और वहाँ उनकी जो प्रिय पत्नी है उत्तानपाद की, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम इस अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो. She was favored by the husband, King Uttanapada, and so it's like someone who has political power. It's like somebody who has attained a high position, big political power. So सुरुचि को उनका सहयोग मिल रहा था उत्तानपाद का. तो ये ऐसे ही है जैसे किसी को किसी ऊंची राजनीतिक स्थिति प्राप्त हो. She could use that position to protect Dhruva Maharaj, but no, she used that position to abuse Dhruva Maharaj. तो उसने अपनी राजनीतिक स्थिति का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि वो ध्रुव महाराज की सुरक्षा कर सके, बल्कि उसने उसका प्रयोग किया ध्रुव. So Dhruva Maharaj, having that
Kshatriya spirit. He was not a Kshatriya because at then, though he was born by a Kshatriya, and he inherently was endowed with the Kshatriya spirit. Kshatriyas, if you do something, they want to do something to show you that, hey, you play with fire. So, क्षत्रिय, चूंकि क्षत्रिय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ध्रुव महाराज, तो स्वाभाविक है कि अगर क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि अगर क्षत्रिय को आपने कुछ किया तो वो ऐसा कुछ करेगा जिससे वो दिखा देगा कि तुमने अग्नि के साथ खेला है. So the Dhruva sought advice from the mother to figure out what to do, because this is my situation. The mother advised him to seek for Lord Vishnu's intervention. तो ध्रुव महाराज जाते हैं अपनी माता के पास, सुनीति के पास, तो वो उनको कुछ सलाह देती हैं और कहती हैं कि जाओ विष्णु के पास जाके, भगवान विष्णु के पास जाके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो. So, first time of his hearing that word, Vishnu, so to say. So he says, so where can I find him? तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार विष्णु का शायद नाम सुना होगा, तो बोला कि मैं उन्हें कहाँ प्राप्त करूं? The mother said, sages go to the forest to perform austerities to attain him. तो कहते हैं कि साधु लोग जो हैं जंगल में जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए. So he decided to go to the forest. तो उन्होंने निर्णय ध्रुव महाराज ने कि मैं जो है वन में जाऊं. Imagine 5 or 6 years old child. Imagine 5 or 6 years old child. He's going to the forest. तो कल्पना कीजिए कि 5 साल का बालक अकेले वो जंगल जा रहा है. The jungle is full of wild animals. तो ये जंगल जो है पूरी तरह से जंगली जानवरों से भरा हुआ है. So even Narada came to suggest to him that he better not go to the forest because it's a dangerous place. तो नारद मुनि ने भी उनको ये सुझाव दिया कि तुम जंगल मत जाओ, ये स्थान नहीं है. But Dhruva's idea was that anybody who is not able to give him directions on how to catch up with Lord Vishnu, they should just go by the side. तो ध्रुव महाराज का क्या विचार था कि जो भी मेरे को विष्णु तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा वो अपने रास्ते चले जाए. In other words, I don't care about my life. If I have to die, it's okay. But mission has to be accomplished. My mother gave me an idea. I want to pursue that. तो उनका ये था, दृढ़ता थी कि वो हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे को अपने विष्णु को प्राप्त करना है, क्योंकि मेरी माता ने मेरे को आदेश दिया, उसको मेरे को पालन करना है. So it's a good example for the modern day parents who are so much attached to their children, and sometimes their children want to be worshipping Lord Vishnu, and they say, no, I know better than you. तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है उन परिवार वालों के लिए जो अपने बच्चों से आसक्त हैं, कि कई बार बच्चा जिद करता है, बोलता है कि मेरे को विष्णु की पूजा करने दो, कृष्ण की पूजा करने दो, तो परिवार वाले मना करते, नहीं ऐसा मत करो, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है. So Dhruva Maharaja's mother was like his Padma Prabhachaka, what is the name? Padma, your first guru, what is the name? Yeah, Padma Prabhachaka guru. He was the first person to give, she was the first person to give the son instructions, idea on who to worship. तो ध्रुव महाराज की जो माता हैं वो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी, यानी कि उन्होंने पहला निर्देश दिया था ध्रुव महाराज को कि कैसे भगवान को प्राप्त करा जाए और भगवान कैसे पूजा की जाए. And Dhruva, having that Kshatriya spirit, Kshatriyas have to achieve their goals no matter the cost. तो क्षत्रिय जो हैं बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. They don't mind dying in that cause, pursuing that cause. They either achieve their goal or they're ready to die.
तो ध्रुव क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है कि या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या उसको लक्ष्य को प्राप्त करते करते अपना शरीर त्याग देंगे. So Dhruva went into the forest, performed his austerities for only 6 months. It means it was very intense, devotionally very intense. To invoke the mercy of the Lord in 6 months, it means the devotion of Dhruva was very, very extraordinary or exceptional. तो ध्रुव महाराज जाते हैं जंगल में तपस्या करते हैं और ये ध्यान देने वाली बात है कि 6 महीने में उन्होंने भगवान की कृपा को आकर्षित कर लिया. तो इसका मतलब ध्रुव महाराज की जो भक्ति की तीव्रता है बहुत ही वेगशाली है, बहुत ही गंभीर है. So, devotional service, we heard the story of Dhruva Maharaj, and we've been chanting for maybe 20 years, 30 years, and we have not attained Ruchi. Then we begin to think, but Dhruva attained the highest position in 6 months. तो कई बार हमको 20 साल से ऊपर हो जाते हैं जब करते हुए, और जब करते 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 कई बार हमारे मन में ख्याल आ जाता है कि हम 20 साल से मैं जब कर रहा हूँ, और ध्रुव महाराज को देखो उसने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया. We have to understand that the dedication to Krishna or devotion to Krishna or even chanting is of different modes. That is that chanting in the mode of ignorance, chanting in the mode of passions, chanting in the mode of goodness. तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, यहाँ तक कि जब भी प्रकृति के अलग अलग गुणों में होता है. तो सतोगुणी चैंटिंग, रजोगुणी, कई बार some people have a lot of pious merit from previous life, they carried over. So this life, they have a short time to attain perfection. Some people have attained high pious credit from past life, so that they come along with that. And so in this life, it's very easy for them to attain. So कई लोग जो हैं पुराने जन्मों के पुण्य कर्मों को, अर्जित किए हुए पुण्य कर्मों को अपने साथ लेके आते हैं और इस जन्म में उनको बहुत कम समय लगता है परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए. So if we make some unhealthy comparisons, we may end up becoming depressed. अगर हम तुलना करते हैं बाहरी दृष्टिकोण से तो हो सकता है हम अवसाद में चले जाएं या फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाएं. What we need to do is to follow the determination that Dhruva demonstrated as a young lad and prosecute our devotional culture. तो हमें ध्रुव महाराज से शिक्षा लेनी है कि उनकी दृढ़ता को अपने अंदर धारण करना है और जो भी हमें विधि विधानों को दिया गया हमको उसी के अनुसार उस दृढ़ता को धारण करके उसको पालन करना है. And based on Prabhupada's purport, it doesn't matter whether you're a grihastha, you are a brahmachari, you are vanaprastha, you are a sannyasi. If you simply become intensified, determined, like the sparrow. Another good example of determination is the sparrow. You know the story of the sparrow. So, there are good examples for us to be able to emulate in our devotional, the pursuit of our devotional perfection. तो इससे प्रभुपाद के तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई सन्यासी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बस एक ही योग्यता है कि दृढ़ता के बारे में भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि चिड़िया की कहानी आती है. तो उस दृढ़ता को हमें धारण करना होगा. And Prabhupada mentioned the purport that can attain the spiritual world in this lifetime. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग में प्राप्त कर सकते हैं. And that's a good example for us, Dhruva Maharaj. तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ध्रुव महाराज. We have to look at how Dhruva Maharaj did it. One outstanding feature is he was very intense in his devotional culture. तो ध्रुव महाराज को उदाहरण देख सकते हैं कितने गंभीर थे वो, कितने निष्ठावान थे अपने आध्यात्मिक अपने प्रयासों को लेकर. He was focused on his goal. The goal
was attain pure love for Krishna. He was focused on the goal. तो वो पूरी तरह से उनका ध्यान केंद्रित था अपने लक्ष्य पे, और लक्ष्य क्या था कि भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना. So we also can focus solely on the goal. इसी तरह हमको भी अपने लक्ष्य पे बहुत ही केंद्रित रहना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना होगा. In America, there were these two devotees, husband and wife. And the husband told me a story. The family, they're my friends. So the husband told me a story. He said, he told his wife one day, he said, my dear wife, I see that you love me so much. तो अमेरिका में थे महाराज, तो किसी ने उनको एक अपना कोई घटना बताई अपने बारे में कि एक बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा, the husband told the wife that he knew that the wife loves him so much. तो और पति ने बताया पत्नी के लिए कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो. So the wife said, yes, my dear husband, but my love for Krishna is far, far, far more than my love for you. तो फिर उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ, लेकिन मेरा प्रेम जो कृष्ण से है वो कई गुना ज्यादा है जितना मैं तुमसे प्रेम करती हूँ. That is the type of fixated attention to attain Krishna, that we may have all the lovable objects around us, but the fixation should be on Krishna, because that is the ultimate goal. तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे पास कोई बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य किस पे रहना चाहिए? अपने जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, उस पे हमारा लक्ष्य होना चाहिए. And that requires consistent determination. इसके लिए निरंतर दृढ़ता की आवश्यकता है. And the Prabhupada also makes a reference to the case of जड़ भरत. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जड़ भरत के दृष्टांत को भी समझा रहे हैं. In his previous life, he was a deer, because in the other previous life, he went to the forest to implement austerities, to perform austerities for perfection. But then he had affection for a little deer. तो जड़ भरत के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में. जड़ भरत जो है, इससे पहले जन्म में एक भरत वो थे, हिरण थे, और उससे पहले जन्म में वो राजा भरत थे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने चले गए थे. So King Bharat, he even left home to go into the forest. That was a bold step. It's like someone who had renounced everything, giving his life to Krishna, and then he got attracted to something else. That causes a delay, one lifetime delay. So अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो बहुत बड़ा एक देखिए कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए. वो एक जैसे सन्यासी है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल में तपस्या करने, लेकिन बाद में उनको कुछ ही चीज़ से आसक्त हो गए, हिरण से आसक्त है, तो इसके कारण उनको 1 या 2 जन्मों का विलंब झेलना पड़ा. So distraction can cause a big trouble in devotional life. तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है या व्यवधान है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में. Therefore, Prabhupada advocates that we become focused on the goal, like Dhruva Maharaj, so that we can attain perfection in this very lifetime. तो प्रभुपाद ये सलाह देते हैं कि हमको भी अपने लक्ष्य पे बिल्कुल तरह से एक निष्ठ होना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, एक ही जन्म में भगवत धाम चले गए थे. In Bharat's case, when he took the body of a deer, he remembered all of his past life. तो
जब राजा भरत को हिरण का शरीर प्राप्त हुआ तो उनको पुराने जन्मों का, विगत जन्म का पूरी तरह से स्मरण था। But as a deer, he was circumscribed. He can't perform devotional service. लेकिन हिरण के शरीर में रहते हुए वो तो पूरी तरह बंध गए थे परिस्थितियों से, तो वो उस शरीर में भक्ति में तपस्या नहीं कर सकते थे। The lesson is that we should be careful about attachments, affections that have potential to distract us from the ultimate goal. तो इससे शिक्षा है कि हमको सावधान रहना चाहिए और बहुत प्रयास करना चाहिए जो हमारे व्यवधान है उससे दूर रहने के लिए, इसी ताकि हम इसी जीवन में भक्ति मतलब लक्ष्य प्राप्त कर सकें। So this is a good text. It's very practical. Now if we become determined, we can attain the ultimate goal of life in this very lifetime. तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है जड़ भरत का कि उसमें देख सकते हैं कि कितना हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी जीवन में। If we remain in this movement, 𝒂𝒏𝒕 Hare Nam Sankirtan. This movement is imported from the spiritual world. If we remain in this movement, serve in this movement, follow the 4 regulative principles, chant at least 16 rounds every day, and serve the mission of Srila Prabhupada, we are going to be given the opportunity to go back to God. तो अगर हम इस आंदोलन में रहते हैं, जैसे कि कहा गया है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो इस आंदोलन में रहते हैं, ये आंदोलन जो है सीधा आध्यात्मिक जगत से इंपोर्ट किया गया है, यहाँ से लाया गया है। तो इस अगर आंदोलन में रहते हैं हम लोग 4 नियम का पालन करते हैं, कम से कम 16 माला का जप करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को हम सहयोग देते हैं, तो इसी जन्म में निश्चित रूप से हम सब भगवत धाम जाएंगे। Any comments or questions? कोई प्रश्न या कोई आप टिप्पणी है तो दे सकते हैं। Hare Krishna Maharaj, thank you for the lecture. In your lecture you mentioned that Dhruv Maharaj is focused on his goal, but his goal was not to get the love of Godhead initially. His goal was to get what you said, kingdom greater than his grandfather. Yeah, but his goal was to meditate on Vishnu, because his mother said you can attain whatever you desire by worshipping Lord Vishnu. What I meant by his goal is the worship of Vishnu. He was not distracted. Nada Muni even came to distract him. He said, don't go to the forest. It's a dungeon. And he was focused on his objective. He's focused on the goal. His goal was to go to the forest to worship Lord Vishnu. Yes, he had inebrities, impurities. We have impurities when we come to Krishna consciousness. We may use Krishna, oh, I love Krishna. We may use us as a facade, but we have impurities. We have anantas. He had anantas. But he didn't go to Lord Brahma. He didn't go to Lord Shiva. He didn't go to Durga. Lord Vishnu, based on the instructions of his mother. Oh, sorry. प्रश्न को हिंदी में थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। महाराज जो प्रभु जी बोल रहे हैं कि महाराज अपने लेक्चर में बताया था कि ध्रुव महाराज का एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण को प्राप्त करना, बट जबकि हम देखते हैं उनको तो राज्य प्राप्त करना चाहते थे, अपने परदादा से भी ज़्यादा, ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा। तो महाराज जी उत्तर में बता रहे हैं कि वो भले ही वो राज्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे विष्णु के पास जाने के लिए, वो विष्णु की सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वो मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए, उनके वो व्यवधान उनको प्रभावित नहीं कर सका। नारद मुनि, हालांकि नारद मुनि स्वयं आए थे उनके जीवन में व्यवधान देने के लिए, लेकिन वो भी उनको प्रभावित नहीं कर सके। तो भले ही उनके अंदर अनर्थ थे, हमारे अंदर भी, उनके अंदर अशुद्धियाँ थी तो हमारे अंदर भी, लेकिन वो कृष्ण के पास ही गए,
वो ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, वो इंद्र के पास, शिव के पास नहीं गए। तो ये उनकी दृढ़ता थी। Because the mother could have told him, go to Lord Brahma. Brahma, if you perform austerities, Brahma will fulfill your desire. He want a kingdom greater than that of your father? Go to Lord Brahma. तो बोल सकते ना कि भाई जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी में क्षमता है कि तुमको राज्य दे सकते, तुमको ब्रह्मा जी से ज़्यादा राज्य चाहिए, कोई नहीं, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। In fact, Lord Krishna mentions in the Bhagavatam that whether you're full of desire, sarva karma, whether you're devoid of any desire, whether you're an Atmaram, see, a beckon, you come to me, come worship me. तो भागवतम में कहते हैं, भागवतम में कहा जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा नहीं है, या मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना चाहते हो, या आत्मा राम हो आप, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे पास ही। Because Krishna or Vishnu is the only person, is the Supreme Personality of Godhead, who is the cause of all causes, and who can deliver the goal, our goal to us. And look at the case of Dhruva. Okay, he had these anarthas, and Lord Vishnu knew he had anarthas. Okay, but because he was so focused, so fixated on the objective, that is the worship of Lord Vishnu, with austerities and penances, Lord Vishnu was attracted. तो कोई भी हमारे पास कितनी भी भौतिक इच्छाएं हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि विष्णु उनका क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि भगवान ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमारी को शुद्ध कर सकते हैं और हमें अपना गोल यानी कि जीवन का जो लक्ष्य है वो दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज के पास ही भौतिक इच्छाएं, लेकिन वो अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे इतना फोकस थे, वो एक निष्ठ थे, तो इनसे भगवान की कृपा उनको आकर्षित, भगवान की कृपा को आकर्षित कर सके। So it appears from the case of Dhruva that if even one has some anarthas and you become so intense in your worship, in your devotion, you will attract the mercy of the Lord. तो ध्रुव महाराज के दृष्टांत से ये सीखने को मिलता है कि आपके अंदर हो सकता है अनर्थ हो, बहुत सारे अशुद्धियां हों, लेकिन आप गंभीरता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक भगवान की भक्ति करते हो तो आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। And even we have so many anarthas, or we have so many desires, so many material affections, so many material attachments. If we can just become so focused and intense in the worship of Vishnu or in the worship of Lord Krishna, we will attract the mercy of the Lord. And the beauty of it is that when Dhruva attracted Vishnu, when Vishnu appeared to him, he became purified of all of the anarthas. तो हमारे अंदर भी कोई हो सकता है, ध्रुव महाराज को देखते हैं कि बहुत सारे, ध्रुव महाराज के उदाहरण से देखते हैं कि बहुत सारे अनर्थ थे उनके पास, बहुत सारे अशुद्धियाँ थी, लेकिन भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, और भगवान उनके सामने जब आए तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे। So in the just after of spiritual imperative that Dhruva, that he was able to attain the Vaikuntha Loka in one lifetime. And Prabhupada said, this has never happened before in the whole universe. Spiritual impetus, spiritual determination. तो ध्रुव महाराज को प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभु ध्रुव महाराज का जो आध्यात्मिक रूप से जो उत्कंठा थी वो इतनी तीव्र थी कि उन्होंने एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उसने भगवान को प्राप्त कर लिया इतनी शीघ्रतापूर्वक। If even we have anarthas, we become intense in our sadhana, we become purified of those anarthas. तो अगर हमारे अंदर अनर्थ हैं, बहुत सारे अशुद्धियां हैं, लेकिन हम गंभीरतापूर्वक अपनी साधना भक्ति का पालन करते हैं तो हम क्रमशः शुद्ध होते चले जाएंगे। And ultimately we will act like Dhruva. Okay, what boon do you want? I don't want anything. Before I was looking for broken glasses. I bet I've had your darshan. I don't need anything else. तो ध्रुव महाराज से बोलते हैं, भगवान जब आते हैं, ध्रुव महाराज बताओ क्या चाहिए तुमको, तो क्या मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
मेरे को पहले बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हुआ मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए. But Vishnu also fulfilled his order desire anyway. He gave him a whole planet to demonstrate that the desires of the devotee never go in vain. The desire of the the desire of the devotee never goes in vain. तो ध्रुव महाराज तो लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया जो लोग जो प्राप्त करना चाहते थे. तो ये दर्शाता है कि एक भक्त की इच्छा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. So Dhruvalok, far greater than anything else you can think of. The achievement, Dhruvaloka, a planet, is far greater than any of his grandfather's achievements. So Krishna gave him Dhruvaloka. तो कृष्ण ने उनको क्या दिया? ध्रुवलोक दे दिया. एक ऐसा लोक जो उनके पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ था, वो लोक दे दिया. So when we are worshiping the Lord, we have to be careful about our desires. तो अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा में लगे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी इच्छा के साथ पाले हुए हैं. We want to become Lord Brahma, Krishna will facilitate that. तो किसी को अगर ब्रह्मा के पास जाना है तो कृष्ण उसकी भी व्यवस्था कर देंगे. Brahma controls the whole universe. ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड का निर्देशन करते हैं, नियंत्रित करते हैं उनको. You know, parents want to control their children. If even they are 35 years old, if they are 40 years old, they want to control them. You want to become a mini Lord Brahmas, controllers, Ishwar above. तो आप कुछ समय में अगर आप जाएंगे तो आप ब्रह्मा की तरह ही कंट्रोल करने लग जाएंगे. 40 साल में, 20-40 साल में अगर I said, people, especially parents, that's very dominant in the 21st century. Parents exercise so much of control over their children. If even their children are adults, that is a symptom of Ishwar above. तो इस 21वीं सदी में देख सकते हैं कि अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों को कितना नियंत्रित करना चाहते हैं. इतना कोई अपने पालतू कुत्ते को भी नियंत्रित नहीं करता. तो ये एक दर्शाता है कि हमारा ईश्वरी भाव है हमारे अंदर ही. So just like Sunita did, there was a case in Delhi. I remember some years ago I was in Delhi temple. And I gave a Bhagavatam class, and so after the class, one young man, he came to me. So कुछ समय पहले महाराज दिल्ली मंदिर में थे. तो दिल्ली मंदिर में कुछ ऐसे ही हुआ था केस. तो एक माता जी उनके पास आई कुछ भागवतम क्लास के बाद कुछ जिज्ञासा लेके. So this gentleman, he came to me. He just finished his MBA. He came to me and he said he has a problem. I said, what is the problem? तो कोई व्यक्ति आए तो उन्होंने बोला महाराज को, मेरे पास मुझे एक समस्या है. तो महाराज ने बोला क्या समस्या है? So he said his father left home, took science, and his mother was the one who trained him in college up to MBA level. तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया और उनकी माता लेकिन उनको MBA करवाना चाहती है, उनको शिक्षा उच्च शिक्षा देना चाहती है. He said, now I've finished my MBA, I want to take care of my mother. I want to pay her back the goods that she has done for me. But what I'm experiencing is a different thing. He said, he's gotten the MBA, his mother trained him in college. He got an MBA. So, the natural inclination for a child, typical Indian child, they want to take care of their mother. He wants to take care of their mother. So वो जैसे because the father has left home, the father has taken science, mother trained him in college, sponsored him in college, he got an MBA, he's finished, he's graduated. So he wants to take care of the mother, but what he experienced was strange to him. तो उन्होंने MBA कर लिया, पूरी शिक्षा ले ली और उनके पिता चले गए थे और वो मदर की देखभाल करना चाहते थे. तो लेकिन जब वो क्या अनुभव करते हो बिल्कुल ही विपरीत था उसके. And what was that? He said, his mother said, hey, follow the footsteps of your father.
Follow the footsteps of your father. Go, move into the temple. Go and be a brahmachari. तो In Delhi. This is not, Puranic story. In Delhi, right here in Delhi. तो वो उस माता ने क्या बोला कि तुम ज़्यादा इधर मत करो, तुम अपने पिता के पथ चिन्हों पे चलो, तुम्हारे पिता ने संन्यास लिया है और तुम जाके मंदिर में ब्रह्मचारी बन जाओ। तो ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये दिल्ली मंदिर की बात है, कुछ समय पहले की बात है। So not all Indian mothers are so much attached to their children that I remember I have got so many cases of brahmacharis coming to say, oh, their mother wants them to marry. So ये बहुत स्थिति है कि माताएं या माता पिता बहुत आसक्त होते हैं अपने बच्चों से। तो महाराज को व्यक्तिगत रूप से कई बार ब्रह्मचारी आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं महाराज मैं तो ब्रह्मचारी बन गया लेकिन मेरी माता चाहती है कि मैं विवाह कर लूं। तो ये महाराज के पास कई सारे केस आते रहते हैं। But that is also as a result of the boys' past high pious credit, because it's difficult to have such a mother. It's difficult to have such a mother. Not everyone has opportunity to have such a mother. तो उस वास्तव में उस जो लड़का था तो उसके भी बहुत सारे पुण्य कर्म होंगे पिछले जन्म के, तो इसी पुण्य कर्मों के कारण ही संभव है कि उसको ऐसी माता मिली जो उसको प्रेरित कर रही है एक ब्रह्मचारी आश्रम में पूरी तरह समर्पित होने के लिए। बहुत मुश्किल है ऐसी माता का मिलना। So any comments or questions? Hare Krishna. So English and then I will translate in Hindi. Question is that you said that we have many impurities. We have many impurities, many anarthas, but if we become determined, we will get purified. So our main problem is that due to anarthas, due to impurity, the biggest my main problem is general problem is because of anarthas and because of impurities, the main obstacle is lack of determination. So you are saying in one side that no matter how much anarthas are there, no matter how much impurities are there, you just be determined and practice devotional service. But the main problem comes when we have impurities, is lack of determination. Okay. Can you translate your question? तो प्रश्न था कि महाराज ने जैसे बताया कि आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी भी अशुद्धि हो, कितने भी अनर्थ हो, लेकिन आप दृढ़तापूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा। लेकिन इसमें समस्या एक आती है कि जब आपके अंदर होती हैं, जब अनर्थ होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है दृढ़ता की, वो डिटर्मिनेशन ही नहीं आ पाती। जब तक अशुद्धि रहती है तो डिटर्मिनेशन ही नहीं आ पाती। तो इस दोनों चीज़ों को हम कैसे देखें? Okay, that's a nice question. There are people who say they don't believe in God. तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं रखते। Especially some astute, notable scientists. They say they don't believe in God. तो कुछ खास तौर से कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते। Say for instance, I know the case of, is it Apollo 11 or something like that, when they were exploring space, and there was some type of anomaly. And although these people, not all of them really believe in God, they told people on earth, "You're in trouble. Pray for us." तो बता रहे हैं महाराज यहाँ पे कि ये जैसे जो वैज्ञानिक वर्ग के लोग होते हैं आमतौर पर भगवान पे विश्वास नहीं करते और कई बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम करते हैं, अंतरिक्ष में अपने यान भेजते हैं। पर जैसे कोई समस्या आती है, जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो सारे लोगों को बोलते हैं, घोषणा भी करते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करो भगवान से। If you is walking across the road, say walking across the express road, and if a vehicle is coming at a high speed and the driver honks, pum pum, they jump off the road. तो दूसरा उदाहरण है कि आप मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर रहे हैं पैदल और बहुत ही तेज गति से गाना आ रहा है और जैसे ही आपको देखता है बहुत जोर जोर से और आप कूद चले जाते हैं। So what I'm trying to drive home is
emergency consciousness. When someone is in danger, automatically they develop emergency consciousness. तो महाराज यहाँ पे एक बिंदु को मुख्य बिंदु लाना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसी कोई विपद परिस्थिति आती है, तो जैसी कोई दुर्घटना होने लगती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से हम कृष्ण भावनावित होने लगते हैं. In most cases, we don't become determined because we are relaxed and we feel we don't have a problem. We feel we have many years to go. तो हम लोग क्यों दृढ़ नहीं हो पाते? उसका मेन कारण ये है कि हम रिलैक्स रहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं और कहते हैं हमारे पास भी बहुत समय है, बहुत टाइम पड़ा है भक्ति करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. But if we, for instance, think that, oh, I'm going to die tomorrow. अगर हम सोचेंगे कि अरे मेरे तो मृत्यु कल ही आ सकती है. Look at the determination of King Parikshit. किंग महाराज परीक्षित की दृढ़ता को देखिए. He was focused on the Supreme. वो कितना ज़्यादा एकनिष्ठ थे भगवान के प्रति. 7 days, no drinking of water. तो 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया. So, if he was not in an emergency consciousness, he wouldn't do that. He would just feel relaxed and go about his normal business and procrastinate here and there. तो अगर वो इस आपातकालीन परिस्थिति में ना होते और या फिर आपातकालीन उस चेतना में ना होते, तो वो भी रिलैक्स करते, वो आराम कर रहे थे, इधर उधर जाते घूमते फिरते. So determination automatically comes when we develop emergency consciousness. तो वो दृढ़ता अपने आप स्वतः आ जाती जब हम एक आपातकालीन चेतना को विकसित करते हैं कि ये आपातकालीन स्थिति है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है. And it's so easy to develop emergency consciousness. और बहुत आसान है इस आपातकालीन इस चेतना को प्राप्त करना. We should think, I'm going to die tomorrow. तो हमें चाहिए डेली कि मैं कल ही मरने वाला हूँ. I'm prepared for that death right now. अब मैं मृत्यु की ही तैयारी कर रहा हूँ. But if you feel you're going to live 100 years, what's the use of, worrying yourself? Go gradually, No need to be so determined because you have many more years to go. तो अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत लंबा जिएंगे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है दृढ़ प्रतिज्ञ होने की. तो आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत समय है आपके पास, तो रिलैक्स रहिए आप. Another example is when exam is 2 weeks' time. You see the students, they become very focused and determined in their studies. तो एक बहुत व्यक्तिगत व्यवहारिक उदाहरण है कि जब एग्जाम आता है या परीक्षा आती है तो विद्यार्थीगण बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से अपना अध्ययन करने में लग जाते हैं. So we should have that type of consciousness, that as emergency consciousness, and we will automatically be fully determined. तो इसलिए हमको इस चेतना को बनाना होगा, विकसित करना होगा कि ये आपातकालीन परिस्थिति है. तो उस चेतना को बनाने के फलस्वरूप ही हम लोग पूर्ण रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकते हैं. And if we say, well, still I am lethargic, I have uninterested approach to developing emergency consciousness. Another thing you can do is to associate with people who have emergency consciousness, who are determined in their devotional life. Because association is contagious. तो ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत आलस्य है, आपको रुचि नहीं आ रही ऐसी चेतना विकसित करने में, आपातकालीन चेतना को विकसित करने में, तो आप ऐसे भक्त का संग कर सकते हैं जो पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और जो पूरी तरह से इस चेतना में है कि मेरी मृत्यु कल ही हो सकती है. तो इस संग से आप लाभ उठा सकते हैं. If even you're not interested in being a brahmachari, or you're not even interested in being in devotional service, or you're not interested in hearing anything about even Krishna, if you associate with those who are adept in Krishna consciousness, they will transform your life. तो इसी तरह जब कोई ब्रह्मचारी किसी को बनना है, if someone wants to become a brahmachari, so उसको ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करना चाहिए. तो वो ऐसे एक निष्ठ हो, पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हो भगवान को प्राप्त करने के लिए. तो उसके संग से उसके अंदर वो परिवर्तन आएगा.
So the environment or the setting where we find ourselves determines what we can be in the future. The environment, the setting where we find ourselves determines what we can be in the future. The type of association. ओके ओके। तो हमारा जो संघ है, तो जिस संघ में हम रहते हैं ये तय करेगा कि हम कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं हो या होंगे भक्ति के मार्ग पे। You want to be determined? Keep close association with people who are very determined. तो अगर आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना है तो ऐसे लोगों का संग करिए जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। If you want to be determined and then you like to hang out with people who are just talking irrelevant things, things that are not related to Krishna or things that are not related to their professional development, you are not going to be infected with determination to pursue your goals. तो लेकिन आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहते हैं और आप ऐसे लोगों का संग करते हैं जो व्यर्थ की अनर्गल बातें करते हैं, जिनका कृष्ण भावना में से कोई लेना देना नहीं, तो आप वो दृढ़ प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। And for association are based on the fact that environment impacts on us, the type of people we associate with, the impact on our values. It is not just a preaching strategy, but it has a basic background in science, in management science or in psychological science. We call it the field theory. The field theory. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस थोड़ा संग करना या फिर ऐसे हो जाएगा। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, इसको कहते हैं फील्ड थ्योरी। The field theory was developed by a German psychologist, Professor Lewin, in the, I think, 1938 or so. And the field theory stipulates that the environment impacts on our behavior. The environment impacts on our behavior. तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे 1938 के दशक में, तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो वातावरण है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। So you come to the temple, you behave in certain ways. You are in the office, you behave in certain ways. तो ये देख सकते हैं व्यवहारिक रूप से कि जब आप मंदिर में आते हैं तो एक विशेष तरीके से हमारा व्यवहार हो जाता है, और हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है। You are warm now. If you go into a cold room and stay there for 1 hour, you'll be shivering. तो अगर आप किसी ठंडे रूम में जाएं, ठंडे कक्ष में जाएं, तो 1 घंटे तक बैठे तो हो सकता है क्या, मतलब कप कपाने लगेंगे 1 घंटे बाद। And when people come together, there is more of subtle interaction than the physical interaction. Subtle interaction. There is more of subtle exchanges. When people are come within a close proximity, there is more of a subtle exchanges than the physical exchange. तो जब हम कुछ लोग किसी लोगों के साथ होते हैं, किसी भी समूह के साथ होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ सूक्ष्म परिवर्तन आते हैं। स्थूल परिवर्तन की अपेक्षा स्थूल परिवर्तन आते हैं हमारे अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन। So yes, we may have anarthas that are impeding our determination, but if we associate with people who are determined, that environment impacts on us to also become determined. ठीक है, हमारे अनर्थ है, इसके कारण हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम ऐसे वातावरण में अपने आप को डाल लेते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ भक्तों से भरा हुआ है, तो हमारे वो प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमारे व्यवहार में भी पड़ेगा। Okay. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your very great realizations. Maharaj, Dhruva Maharaj has the determination, or he was fixed just hearing the words of his mother. But a person means placing myself in that position, that I don't have that much faith that my mother is what my mother is telling, that is the only superior thing to me. So how to have faith that I don't go any other way other than my mother, what is my mother or my spiritual master is telling. Okay.
महाराज जी, जैसे आपने बताया कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के वक्तव्य को सुना और वो निश्चित करके उसको जंगल में चले गए उसको प्राप्त करने के लिए, और किसी भी अन्य धारणा से भ्रमित नहीं हुए। तो ऐसा फेथ डेवलप करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए? हरे कृष्ण। So thank you very much. That's a very insightful question, because one could say, "Oh, I heard from the Bhagavatam class that follow the instructions of your mother and you can attain perfection." तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इससे कोई सोच सकता है कि भाई मैं अपने my association with the mother. No. See, one can say, I heard in the class that Dhruva Maharaj followed the instructions of his mother and he attained perfection. तो कोई बोल सकता है कि भाई आज मैंने भागवतम क्लास में सुना कि ध्रुव महाराज के बारे में, उन्होंने अपनी माता की बात सुनी और उनको पूर्णता प्राप्त हो गई भक्ति में। So I will also just simply follow the instructions of my mother and I will attain perfection. और सिर्फ ठीक है तो केवल मैं अपनी बाकी माँ की बात मानूंगा और मुझे भी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। Is it what we should do? क्या यही हमें करना चाहिए? We have to have a balance. तो हमें एक संतुलन बना के रखना होगा। The mother is supposed to be the Padashaka Guru, but what is the realization of the mother? तो माता है वो एक हमारे वर्तमान प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक गुरु हैं, लेकिन उनके रियलाइजेशन, उनकी साक्षात्कार क्या है? I mean, it's like we have Mother Kunti, Devahuti. Devahuti even had the Supreme Personality of Godhead. तो हमारे पास उदाहरण है भागवतम में महारानी कुंती का, माता देवहूति का। तो देवहूति के पास घर में स्वयं भगवान थे। And these type of mothers, they focus on the absolute. तो ये प्रकार इस तरह की जो माताएं हैं वो पर ब्रह्म में पूरी तरह से एकनिष्ठ होती हैं। There are so many mothers who will dissuade you even just to be a vegetarian. I've seen so many kids in India. I know of a case, the boy is even doing, he had a first class honors in his bachelor's. He's doing a master's degree. And the parents still force her to eat onion and garlic. तो ये मैंने बहुत देखा है, कई माताएं होती हैं और वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो मांसाहार भी छोड़ सके। मैं एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को जानता हूँ, बैचलर किया और उसके बाद मास्टर्स डिग्री की, बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी माता पिता अभी भी उनको जोर जबरदस्ती करते हैं प्याज लहसुन खाने के लिए। So we have to weigh the mother's instruction on the scale of Guru, Sastra and Sadhu. तो अगर है या पिता है तो हमें उसका संग करना है किस आधार पे, किस पैमाने पे? गुरु, साधु और शास्त्र के पैमाने पे। I remember the case of one brahmachari. He's very advanced brahmachari, but till the point I met him, he told me the mother is disturbing him to get married. तो एक ब्रह्मचारी से महाराज मिले, वो बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी, भक्ति में काफी उन्नत है। तो उन्होंने बताया कि मेरी माता मेरे को परेशान करते रहते कि तुम विवाह कर लो। I think when I gave the class in the temple, the mother was there, and I can't remember this story that I narrated. And that boy, he told me, the mother came to him after the class and said, "You be a brahmachari." तो महाराज जी बता रहे हैं उसका किसी एक कक्षा में वो माता भी आई थी। तो उस ब्रह्मचारी ने बाद में बताया कि कक्षा के बाद, उस कक्षा को सुनने के बाद महाराज की वो गई घर पे, तो उन्होंने बोला कि तुमको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। That was in Kolkata, one of these big new project that is coming up in Newtown. Yeah, one of these, he preaches in the universities and all this thing. I graduated, okay, but still having exercising that type of control. I remember also the case of what. Go, tell this so that I don't go too far. Sorry, I missed Maharaja. So I said he has graduated, a brahmachari, preaching in the universities and colleges. But the mother was still bugging him to marry.
तो वो ब्रह्मचारी हैं, वो कई विश्वविद्यालयों में कई कॉलेजों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी माता उनको बार बार परेशान करती है विवाह करने के लिए। And he was not the only son. He has other brothers, other siblings. They don't want to leave him alone. So he had other siblings. He had other brothers. Okay, okay. So उनके और भी भाई थे, तो वो कोई अकेले नहीं थे। Who are not brahmacharis. और वो जो कि ब्रह्मचारी नहीं थे वो सारे। But the mother want to control everyone to be a grihastha. तो लेकिन माता फिर भी सबके ऊपर नियंत्रण रखना चाहती थी कि सारे के सारे लोग गृहस्थ बने, सारे भाई बेटे मेरे। So for you to listen to your mother, you have to weigh the instruction on Guru, Sadhu and Shastra. How is it going to be? How is that instruction going to give ultimate benediction, ultimate benefit to the whole family? Now Dhruva attained perfection and the whole family benefited. तो अभी देखना पड़ेगा कि हम माता की बात सुने या अपने अभिभावकों की बात सुने। पैमाना हमारा गुरु साधु शास्त्र होना चाहिए। और ये देख सकते ध्रुव महाराज के उदाहरण से कि ध्रुव महाराज सुनीति माता ने वो कहा कि भगवान को प्राप्त करो और उससे उनके पूरे परिवार को लाभ हुआ। So yes, we have to take advice from our mothers. As devotees, we have to weigh that on the scale of Guru, Sadhu and Shastra. ठीक है, अपने माताओं से अपने परिवार वालों से परामर्श ले सकते हैं माता से, लेकिन उसको मापदंड हमारा क्या होना चाहिए हम भक्त से पूछ सकते हैं कि हमारा मापदंड एक ही होना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। But if you are just a child in college and you have been taken care of by your parents, what can you do? तो अभी जस्ट आया कॉलेज में और माता पिता उसको पीट रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हो? My advice to young people, when they come to devotional life and their parents like an obstruction for them to even just be a vegetarian, not to speak of chanting, I tell them, adjust yourself, don't make fights, tolerate everything until you graduate. तो कई बार आते हैं वो ग्रेजुएशन में, मतलब पहले साल में होते हैं, तो उनके माता पिता उनको मना करते हैं कि वो भक्ति में आए ही होते हैं, उनको मना करते हैं कि तुम मांसाहार नहीं छोड़ोगे। तो महाराज कह रहे हैं मतलब झगड़ा मत करो, आप कोई मतलब वैर भाव मत रखो, उनको आप एडजस्ट करो धीरे धीरे अपने आप को। आप ग्रेजुएशन पूरा होने तक उनके साथ आपको रहना है तो फिर आप एडजस्ट करके रहो। The reverse is that some children are very lucky. They are born by devotee parents, devotee mother, and then the mother will, like force them to come to temple, and that is a great blessing. तो इसका उल्टा भी है कि कई बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं कि भक्त के परिवार में पैदा होते हैं और माता आती है, भक्त मंदिर में दर्शन करती है और वो भी आते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। So yes, mothers are wonderful. They are our sweet mothers. They take care of us, and we should be attentive to their needs. तो हाँ, अगर वैसी माता है कोई भगवान की भक्त है तो उनको हमें उनकी बातों को मानना चाहिए और उनको एक तरह से उनको मतलब सम्मान देना चाहिए। All right, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. All glory to the Sangha devotees. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी का, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको दिया और फरीदाबाद के भक्तों ने इतना अच्छा एक श्रवण किया। जस्ट ग्लोरीफाइंग यू महाराज। सो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से जोरदार भगवान महाराज का हम धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।